he didn't mention, but Pandit Bhatt Diwanji has taught me for the last 30 years. He had taught me, and he was a member of our family. He came every day to our place, and almost 1,000, 2,000 bandishes he has taught me. So I'm going to sing just 5, 6, 7 of them, make it very brief as they have asked me to, Swamiji has said. But I wanted to show you more bandishes. So I thought I'll make it very short but show more bandishes. Diwanji was a great musicologist, not only a writer, but he could explain, he could sing and demonstrate so beautifully. And all these various aspects he learned from several ustads and several great musicians of Banaras like Siddheshwari Dev, Begum Akhtar. उनके साथ ताल्लुक है उनका, उठना बैठना था. सिद्धेश्वरी जी, बेगम अख्तर जी एंड उस्ताद विलायत हुसैन था साहब, उस्ताद नादिम हुसैन था साहब, इनसे था. सो वो सब में जो उनका विश्व था, the whole realm of knowledge and the whole array of ragas and the realm of knowledge which he had, it is little I want to pass on to our next generation, which is Seema. She has also learned from Padmata Italwalkar and Rashmi Dixit and Devangini, my students. Others, I want them to take this up and have Diwanji's name coming ahead at all times in future. Thank you so much. I will start with Rag Kafi Kannada and Shahana Kannada, but very brief. I will take a whole lot of bandishes, and also after that we will take Thumri, Dadra, Kajri.
उसकी भी एक बंदिश ब्रीफ में ज़रा बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत प्रिय राग थे दीवान जी के। बहुत मुझे गाते तो बोलते थे ये गाओ, ये शाहना गाओ, ये गाओ।
दिन बैठ जाते थे। और जैसे कजरी भी और ये दादरा उनको बहुत पसंद था, वो मैं एक थोड़ा थोड़ा सुनाऊंगी। ये ऐसा है दादरा।
मुश्किल बात है ये, क्योंकि बहुत आड़ी टेढ़ी लय में और लय के काम करे और अलग अलग लय का जो अंदाज दिखाते हैं, अलग अलग सुरों का, उसमें सुर ये टुकड़ियों में कोई भी सुर आ सकते हैं, हम इमेजिनेशन यूज करके करना पड़ता है हमें, कोई लिखे हुए नहीं है सुर कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। कलर, कोई भी कलर जैसे पेंटिंग में कोई भी लगा देते हैं, उसका एक अर्थ होता है, अंदाज होता है।